husband आपके साथ है लेकिन ये आपके husband नहीं है, that's not very good. It's not good. You shouldn't be doing that. ठीक है? So I would take some serious advice, correct advice on that. Thanks for your call. चलते हैं अब next call की तरफ. Hello. 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 हेलो सर, मैं नाम रिकिया। मैं आपसे ये पूछना था, मैंने साइलेंट का केस किया हुआ है। अभी मेरी पहली इंटरव्यू होगी और दूसरी इंटरव्यू हुई मेरी 7 घंटे की। अभी उन लोगों ने मेरे से 12 साल की उम्र से लेके 28 साल की उम्र तक सब कुछ पूछा, इंडिया में क्या करता था, कहाँ रहता था। तो अभी फिर मैं उन लोगों को सब कुछ बता दिया और उन लोगों ने मेरे को बोला था एक बायोमेट्रिक पता नहीं कैसे वो फिंगर लेने के फॉर्म दिया था, वो भी मैंने दे दिया। वो भी उन लोगों ने पहले तो बोला कि आप पढ़ेंगे, तो उसी के बाद उन लोगों ने मेरे को ये बोला कि अभी आप फिंगर देने के बाद आपका जो डिसीजन होगा तो हम जल्दी भेज देंगे। अभी 1 मंथ हुआ, अभी आया नहीं डिसीजन। मैंने डिसीजन आने को आई थिंक जो मैक्सिमम टाइम जो डिसीजन लेने में होता है वो तो उन्होंने साल का रखा हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर आपका केस पॉजिटिवली हो गया तो प्रोबेबली आप ये सोच सकते हैं कि आपको मे बी इन द नेक्स्ट 6 वीक्स से जॉब मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स लेने की वजह क्या होगा कि आपको वो कार्ड भेजते हैं फॉर एज ए रेफ्यूजी, क्योंकि सबको अब आजकल बायोमेट्रिक्स कार्ड मिलते हैं, नोबडी गेट्स एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो आपको वो बायोमेट्रिक्स कार्ड मिलेगा। अगर आपका अनसक्सेसफुल हुआ तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने आपका केस सर्टिफाई ना किया तो उसके ऊपर फिर आपको राइट ऑफ अपील मिलती है। राइट ऑफ अपील रिगार्डलेस आपको मिलेगी उन्होंने असाइलम केस, लेकिन कई दफ़ा होता है कि वो आपको असाइलम का केस सर्टिफाई कर देते हैं कि जी ये बंदा वी डोंट बिलीव एनीथिंग ही सेड, तो वो आप अपनी कंट्री से जाके अपील कर सकते हैं। वो आजकल काफ़ी कॉमन सी चीज़ हो रही है, आई नोटिस, जिसमें आपके ऊपर सिर्फ JR रह जाएगा। विद रिगार्ड्स टू अगर उन्होंने आपको सर्टिफाइड केस ना किया तो आपको अपील का हक एट दी फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल इन द यूनाइटेड किंगडम मिलेगा, एंड ऑब्वियसली जब आपको डिसीजन आएगा कॉल अस बैक एंड आई कैन सॉर्ट ऑफ प्रीटी मच वॉक यू थ्रू कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर योर कॉल। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मैंने वो हिना जी से बात करनी है। ठीक है जी, बोलिए। जी, मैंने वो पूछना था, मैं यहाँ की ब्रिटिश बोर्न हूँ है, तो वो ना क्या मैंने अपने सास ससुर को बुलाना है पाकिस्तान से, मुझे बताना कि आप ना मैं क्या कर सकती हूँ, कौन से पेपर वो। अच्छा सॉरी, किसको बुलाना है आपने? my mother-in-law, my father-in-law. Your mother-in-law and father-in-law, and is that a visit visa that they're going to come to on, or is that going to be what are you applying for? So visit visa, yeah. Okay, that's fine. All right, what you would need to do is get obviously your passport. You'd need to provide evidence of how they will be maintained and supported while they're here. That you would have to provide evidence with respect to the accommodation that they'll be living in. So those are the circumstances that you need. You normally need a sponsorship declaration with that also, which any solicitor can prepare. The cost varies from about £20 to £50. Thereafter, what will happen is that you have to provide evidence of what their lifestyle is in their home country. So if it's in Pakistan, where do they live? Do they work? Are they in rented accommodation? Do they own the property? How much money they have in their account? Where does the money come from? Where are their what is their financial situation? What is their economic and social situation? Are they dependent on other family members? And what is their intention? Why are they coming here for? Are they coming here because you're pregnant? Are they coming here because your child's having a birthday party? Your husband's getting graduated? What's the reason for them coming? How long they're going to come for, whether or not they have medical insurance, which I think can be arranged from Islamabad, if they've got any adverse immigration history, so have they applied to another country and been refused, or do they have positive immigration history, are they constantly visiting different countries? These are things you have to establish. When you make the application, keep in mind that the key is that they will come and they will return at the end of their visit. So that's the key. That's what you need to show. If they have no finances, if they're being supported by their son in the United Kingdom, if they have, are in rented accommodation, if they've got no social or economic status in Pakistan, it's going to be very difficult to convince an immigration officer that they should be allowed to come here. And also, when you make the application form, make sure it's very accurate. I've recently had a case where, unfortunately for the family, they completed
completed the form and they didn't provide the entire immigration history, and they got refused on the basis of section 320, and then obviously they, they've been banned from coming to the United Kingdom 10 years. So immigration history is very, very important. So, you may not think it's important, but in fact it is. So you need to put all the details down there. I think that's pretty much it. If you email into the studio, they can forward me info@venustv.com. I've got a standard list for visit visa applications, and I'm sure they'll be happy to forward it to you. Okay. Okay. Thanks for your call. चलते हैं next call की तरफ. Hello. Hello, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. क्या question है आपका? Actually, I am here in England for 27 months on a spouse visa. I came to England in 2012 before the rules changed. Perfect. Okay. So we have taken child benefit and child tax credit. Okay. So before I apply for my ILR, will it cause a problem? And if it will cause a problem, how can we rectify? Okay, This is the my child question. tax credit, is that for a British child? What Is did your you child say? British? Is your child British? Yes. Okay, so and your husband's making that And my husband application? is also British. Okay, yeah, so that's child tax credit and child benefit should not impact on your application. You just need to declare it because the benefit is being received for a British child. Although you would probably be on the application form, it would be your husband that's claiming it, so technically you wouldn't be claiming public benefit. So I don't think that'll impact on your application whatsoever. I think what the key benefits that would affect it is if you're receiving housing benefit, income support, a working tax credit, and I think there's a list of documents. But I think child tax credit, well, I know for a fact that child tax credit and child benefit for the purposes of British child should not have any impact on your application. Thanks for your call. चलते हैं next call की तरफ. Hello. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम. क्या question है आपका? Hello. जी क्या question है आपका? Hello. आप काइंडली अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखें ताकि आपकी आवाज़ हमारे तक आ सके. बंद है, मैं दूसरे कमरे में हूँ. जी प्लीज़. अब आपका क्वेश्चन क्या? जी क्वेश्चन है कि 14 ईयर बेस पे जो मिला ILR मिला है, तो अभी क्वेश्चन है कि कब नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, 1 साल बाद? नहीं, after 5 years आप apply कर सकते हैं discretionarily after 1 year, but the Home Office have been quite firm recently about granting indefinite nationality after 1 year on the basis of 14 years residence. Their requirement is कि आप 5 साल बाद apply करें. अगर आप apply करते हैं, you have to show exceptional circumstances कि discretion आपके favor में exercise किया जाए. Although 2-3 साल पहले मैं applications डालते होते थे for nationality after 1 year और वो grant हो जाता था. Over the last 8 months हमने notice किया है कि generally Home Office are very, very difficult with that. I mean, obviously there are exceptions to the rule. For example, अगर आपके पास बच्चे हैं जिनको आपका indefinite मिला है, उनको अगर nationality मिलती है, then there is reason to grant the parent nationality as well. So आप exceptional circumstances अगर आप दिखा सकते हैं, then certainly Home Office के पास discretion है जिस पर आपको nationality grant कर सके. Otherwise not. Thanks for your call. चलते हैं next call की तरफ. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर क्या क्वेश्चन है आपका? भाईजान, हमने ये लास्ट 5 मंथ ना हमने फ्लैश. जी भाई मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, आप जरा ऊंची बोलेंगे? Okay, I'm sorry about that. सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई. नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं. हेलो. Hello. हेलो. हेलो. जी सर क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सर. मैडम से बात कर सकता हूँ? जी आप क्वेश्चन करें. ओके, नाइस टू सी आफ्टर लॉन्ग टाइम. और एक क्वेश्चन था कि मैंने पूछा था, तो मैंने अपनी बेटी के मतलब हम इधर 13 साल से तो केस डाला हुआ था, तो अप्रैल में, तो दिसंबर में वो रिजेक्ट आ गया. और अभी उन्होंने दिसंबर में रिजेक्ट आ गया. और हमने हम ओवर से इधर, तो अभी हमने उन्होंने अपील राइट दिया है, तो सितंबर में जाने का है. तो क्या हो सकता है? देखिए, आप ये याद रखिएगा कि आपने अपेंडिक्स FM के हिसाब से दिखाना है. अगर आपने 7 years के बेस पर बनाया है, देन आप रूल्स देखिए. रूल्स आर क्वाइट क्लियर नाउ. देयर इज नथिंग, उसमें काफी एक्सप्लिसिट है.
जो बच्चा यहाँ 7 साल से है जिसका कोई इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल कनेक्शन अपनी होम कंट्री से नहीं है और जिसकी उसको यहाँ लीव टू रिमेन मिल जानी चाहिए, तो आपको ये चीज़ें दिखानी है, क्योंकि अभी आर्टिकल 8 जो है वो होम ऑफिस फेज आउट करना चाह रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ इट, क्योंकि अभी कोर्ट ऑफ अपील का जो केस है उसमें ये लिखा है कि होम जो ये इमिग्रेशन पॉलिसीज है दे आर ए कंप्लीट पॉलिसी एंड क्योंकि वो हर अगर आपका केस एक्सेप्शनल नहीं है तो इस कैटेगरीज में आपको कंसिडर होना पड़ेगा। तो या तो आप अपना केस एक्सेप्शनल बनाइए या एक्सेप्शनल नहीं है तो आप रूल्स के अंदर अपना बताइए। आपने ये दिखाना है कि आपको आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ कैसे अफेक्ट होगी वापस जाने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 3 साल का है और वो उर्दू नहीं बोलता या पंजाबी नहीं बोलता या बंगाली गुजराती नहीं बोलता, वो 3 साल का बच्चा अपनी होम कंट्री में जाके आपको अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो वो पढ़ भी सकता, वो लिख भी सकता, वो हर चीज़ कर सकता है। जो बच्चा 7 साल का है, आर्ग्यूमेंट्स है कि वो भी रीएडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो बच्चा 12 साल 13 साल का है, जो यहाँ 3 साल की उम्र से है, जो ना अपनी लैंग्वेज बोल सकता है, अगर बोलता नहीं तो समझ सकता है, लेकिन ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, वो अपनी एजुकेशन की करियर में इम्पोर्टेंट जंक्चर जिसको कहते हैं उसके ऊपर है, तो हाउ इज दैट चाइल्ड गोइंग टू रीएस्टैब्लिश देमसेल्व्स बैक होम। हमारी कल्चर में मैं हमेशा मुझे लगता है मुझे 4-5 साल ये हो गया, लेकिन नोबडी लिसन्स टू मी। सारा एजुकेशन सिस्टम, इनफैक्ट इन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, in the private schools there is better than state schools in the United Kingdom. So the fact कि आपका बच्चा अकेला यहाँ पढ़ रहा है और उसकी पढ़ाई को affect होगा, has no bearing on him granting leave to remain. It honestly doesn't. You'd be surprised how many times a judge has said to me, yes, but you have an education system in their home country, why can't they go to that? It's not necessarily education. It is their life in the United Kingdom, their friends, their thinking, their social circle, their extracurricular activities, their education. It has to be an overbearing amount of information. मैंने अभी I think 3 वीक पहले एक केस किया है जहाँ एक क्रिकेट कोच, हमारे क्लाइंट का जो बेटा था, he played county cricket, और उसने कोर्ट में जाके कहा है कि जी ये बच्चा he is so brilliant कि one day I can envisage him playing for England. You can't argue with something like that. You can't. A judge cannot turn around and say, well, no, he should go back and play for Pakistan or India. They don't say that. But some, it's saying, gee, मेरे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में करें. Well, they can do very well at, wherever they're studying. Another case I had recently, जहाँ बच्चा GCSE कर रहा था, I think he's in year 9. He's in year 9. तो उसके स्कूल में रिपोर्ट आई थी कि वो कह रहे थे कि अगर आप इस टाइम इस बच्चे को अपनी एजुकेशन से निकालेंगे तो he will fall back 2 years, ठीक है, and that will be physically and mentally detriment. एक और हमारा क्लाइंट था जिसके पेरेंट्स को मेडिकल इश्यूज थे, तो वो बच्ची बहुत sort of depressed रहती थी, बहुत scared रहती थी, she's not communicating, वहाँ social services उसको assistance provide कर रहे थे, तो वो उसमें रिपोर्ट में लिखा गया था, जैसे social services की रिपोर्ट थी, उन्हें लिखा गया था अगर आप इस बच्चे को इस environment से निकालेंगे they will become detrimental. तो it's not enough कि आपका बच्चा यहाँ 7 साल हो गया, 7 साल की marriage deficit हो गया. You have to prove that there will be significant damage to that child if they were to move from here to another country, ठीक है? Please show that they have no cultural, no social, no ties, and वो बच्चे यहाँ के हैं. And a lot of the kids जो यहाँ grow up करे, they are from here. उनकी mentality यहाँ की है, उनकी सोच यहाँ की, उनका सब कुछ यहाँ का है. But you need to be able to express it. The children need to be able to express it. If you have a 13, 14-year-old child, I wouldn't say कि वो court में जाके evidence दे, but I would expect them to write a letter to the judge or to the immigration and say, this is what I want to say. This is why I can't go back. This is the problems I'm going to face. ये चीज़ें लिखिए, उनको दिखाइए. Don't do a standard application. Make the case individual. और अगर आप सितंबर में जाएंगे with an individual case, I'm sure you'll be successful. Thanks for your call. अब ब्रेक का वक्त हो गया, चलते हैं ब्रेक की तरफ.